Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई आर्थिक, कारोबारी और शेयर बाजार से जुड़ी खबरों को लेकर हाजिर हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी। Domestic stocks climb to lifetime highs. The Sensex closes above the 58,000 mark. Nifty ends above 17,300. Rupee appreciates to deal near 73 rupees per dollar. And gold rises above 47,000 rupees per 10 grams level at the multi-commodity exchange. घरेलू शेयर बाजार में लिवाली का सिलसिला जारी। नई ऊंचाई पर पहुंचे प्रमुख सूचकांक। सेंसेक्स 58,000 के ऊपर और निफ्टी 17,300 के स्तर को पार कर गए। $1 के तुलना में रुपया हुआ आज मजबूत, 73 रुपए के स्तर पर आया के नजदीक पहुंचा और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने का मूल्य बढ़कर 47,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से ऊपर आया। घरेलू शेयर बाजार में आज लिवाली तेज रही और प्रमुख सूचकांक अपने नए उच्चतम स्तर पर पहुंचकर बंद हुए। आधा फीसदी बढ़त के साथ सेंसेक्स और निफ्टी दोनों का नया स्तर आज रिकॉर्ड हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 277 अंक यानी 0.48% की बढ़त लेकर 58,130 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 89 अंक यानी 0.52% बढ़कर 17,324 दर्ज हुआ। छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों की लिवाली भी तेज रही। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.35% लाभ में रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.41% की वृद्धि हुई। And moving on to our top Sensex and Nifty story. Sensex and Nifty today climbed to lifetime highs. Both stock indices climbed around 0.5%, even as the cues from the global equity markets were mixed. Sensex closed above the 58,000 mark, while Nifty ended above the 17,300 level. The BSE Sensex gained 277 points, 0.48% to finish at 58,130. The NSE Nifty also surged 89 points, 0.52% to settle at 17,324. In the broader market at the BSE, the mid-cap index gained 0.35% and the small-cap index surged 0.41%. In the Sensex pack, shares of 19 companies gained while 11 logged losses. Reliance Industries was the top gainer as it surged 4.1%, followed by Titan, which gained 1.3%. Consumer durables climbed 1.1%, while realty surged 0.9%. On the other hand, Mahindra & Mahindra and Bharti Airtel both declined 1.2%. HDFC Bank fell 0.9% and HDFC slipped 0.7%. In the sectoral indices, 15 out of 19 sectors logged gains. Energy gained the most as it climbed 3.6% and oil and gas surged 2.3%. IT and consumer durables both surged 1.5%. Tech sector stocks gained 1.4%. On the other hand, the telecom plunged 0.5%, while Bankex, Finance and FMCG slipped 0.2% each. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,668 companies gained, while 1,532 fell. Shares of 138 companies, remained unchanged. नजर डालें रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 5 पैसे मजबूत हुआ, 73 रुपए 2 पैसे के स्तर पर आ गया। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में थोड़ा सा कमजोर हुआ, 92.22 पर समाचार लिखते समय चल रहा था। हमारे साथ खबरों पर आज चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित हैं देश के वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पुनीत जैन। पुनीत जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज जी। पुनीत जी, बाजार
कुलांचे ले रहा घरेलू शेयर बाजार में लगातार तेजड़िए हावी दिख रहे और जो तेजी का सिलसिला यदि हम एक सप्ताह की ही बात करें तो अच्छी खासी तेजी है। 58,000 के स्तर से ऊपर अब 59,000 की ओर हमारे कदम सिर्फ एक सप्ताह में लग रहा है कि हम यही गति रही तो फिर पार कर जाएंगे। किन अर्थों में ले रहे इस तेजी को, एक बड़ा बुलबुला या वास्तविक आधार पर बन रही तेजी जो आगे भी सस्टेन करेगी? मनोज जी, आपने सही कहा कि जो स्टॉक मार्केट है खासतौर से भारत में जी, उसका जो प्रदर्शन है वो चौंकाने वाला है और बहुत ही तेजी से बाजार बढ़ रहा है और उसकी उम्मीद नहीं थी। और इस सप्ताह यदि हम बात करें तो करीब करीब 4% जो हेडलाइन निफ्टी और सेंसेक्स है उसमें तेजी आई है। यानी आप कह सकते हैं कि करीब 2,000 पॉइंट सेंसेक्स बढ़ा है और करीब करीब 500 पॉइंट से भी ज्यादा निफ्टी बढ़ा है और ये सबसे बड़ी तेजी है फरवरी के बाद। तो फरवरी के माह के बाद हमने देखा कि थोड़ा सा बाजारों में कंसोलिडेशन रहा। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप्स में काफी अच्छी तेजी देखी थी हमने, पर जो हेडलाइन निफ्टी और सेंसेक्स इंडेक्सेस हैं इसमें सबसे बड़ी तेजी है फरवरी के बाद। और नेचुरली आज जो क्लोजिंग है वो रिकॉर्ड हाई लेवल्स पर हुई है। एक इस बाजार में और अच्छी बात हम देख रहे हैं कि अब इस बार जब बाजार में तेजी मैं कहूंगा पिछले 2 सप्ताह से हम देख रहे हैं तो जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत अच्छी है। यानी ज्यादा शेयर्स में हम बढ़त देख रहे हैं। पहले हमने ऐसा देखा है कि जब मार्केट चलती थी तो बहुत चुनिंदा शेयर्स चलते थे और उन्हीं से ही इंडेक्स में बढ़त आती थी और ज्यादातर जो इन्वेस्टर्स छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनको लगता था कि उनको कुछ फायदा नहीं हो रहा। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। हम देख रहे हैं कि जो मार्केट पार्टिसिपेशन है वो काफी ज्यादा है, ब्रॉडर मार्केट में काफी गेन्स हैं। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी चीज है। उसके कई कारण है। देखिए, ये जो बाजार में कॉन्फिडेंस है, लोग इसके अलग अलग अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कई सारे फैक्टर्स जो डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं, यानी हमारी इकोनॉमी की जो प्रदर्शन है वो बहुत अच्छा है और कुछ ग्लोबल फैक्टर्स हैं, कुछ पैसा बाहर से भारत की तरफ ज्यादा एलोकेट हो रहा है और हम काफी हद तक चाइना में जो इन्वेस्टमेंट्स है उसको क्रॉस कर चुके हैं इस साल। तो मुझे लगता है कि ये सब मिलाकर के एक भारत की जो अर्थव्यवस्था उसमें कॉन्फिडेंस है। देखिए, बाजार में उतार चढ़ाव आता रहेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि बाजार में कल करेक्शन नहीं हो सकती, लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म जो संदेश है वो ये है कि भारत की इकोनॉमी इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन और आने वाले दिनों में वी कैन एक्सपेक्ट बेटर थिंग्स फ्रॉम द इकोनॉमी। Puneet, just looking at a macroeconomic indicator, which is a PMI for services, the Purchasing Managers Index is now climbed to 56.7 for the month of August as compared to 45.4 for the month of July. What does this mean in simpler terms? So, Arjun, this is a very important indicator. First of all, I'd like to point out that services comprises 55% of the GDP. So if service in India, because telecom, banking, healthcare services, tourism, which is very human intensive, these activities are actually considered as part of the services sector. In India, in the Indian economy, now 55% of the GDP comes from services sector. So growth in services was very important. This reading which came today, which is about 57 of the PMI, it denotes an expansion. Any reading above 50 suggests that year on year the expansion is there. So, and this is the highest reading in last 18 months. So after 18 months, we have seen this kind of expansion in services. So it not only shows that the economy or the GDP is growing steadily, it also means that labor-intensive sectors are also growing now, and not just manufacturing. So in that sense, it is a good message. And another thing I'd like to add here again, which is very, which would many listeners may not know, straight away know. Today, China came out with their own PMI in services, and actually there was a contraction in China, which is completely unexpected. We always expect to lag China, in terms of growth, in terms of potential to economy. For the first time, India's services PMI has grown, and China's PMI has actually taken a setback. So I think that is that's just the beginning of a trend. Also looking at other trends in the market, energy index went up by 3.6%. Is it about Reliance Industries and its acquisition of Just Dial through its Reliance Retail Ventures, or is there something more to the energy index?
So you're right. Energy index, the largest weight in the energy index is from Reliance, and Reliance went up by 4% today. So clearly the energy index went up. But in fact, it is not because of the acquisition of the Just Dial company. Today, Reliance chairman came out with a statement saying that they want to be the cheapest producer of hydrogen and green energy in the world. And this is the largest private company in the country. They have enormous resources, and usually they deliver on a very futuristic business. So I think market was reacting to that confidence that the Reliance management was enunciating, saying that they will become very large global producers of green energy, particularly green hydrogen. And I think that's a very important thing, because for India, energy security is paramount if we really want to grow at sustained 7-8% in future. The auto index and its manufacturing right now for EV vehicles is more battery-based from rare earth metals like lithium. Where does hydrogen figure in this as a fuel for the future as far as our economy is concerned, even though you have leading economies like Germany and the United States which are betting on hydrogen as a fuel for the future? So absolutely, Arjun. In fact, this is going to be a classic battle going forward between two different technologies and where the world will finally tilt. Right now, of course, EVs have a head start because a lot of electric vehicle companies have been there, and China has a huge lead in economic vehicles, in electric vehicles. But I think hydrogen has enormous future, and if they are able to create the infrastructure for producing and delivering liquid hydrogen, it is not even better than electricity, because ultimately electricity also produces a carbon footprint. So liquid hydrogen is definitely better environmentally, and I think economically, like you said, it does not depend on rare metals like lithium, which China has cornered worldwide. In fact, China, everybody knows, has cornered the supplies of lithium and is trying to dictate that market. So I think green hydrogen is really the way forward. And if economies like USA, Germany, India, which are huge consumers of the energy, if they can adopt green hydrogen, I think that will be a game changer. So I think next 10 years we're going to see a classic battle between these two technologies. पुनीत, यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन का भविष्य जैसा भी हो, वर्तमान में क्या स्थिति है और दुनिया में किन किन स्थानों पर इसका प्रयोग, कह लें कि प्रयोग से बढ़कर व्यावसायिक दिशा में बढ़ता नजर आ रहा है? तो मनोज जी, अभी ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन और जो ट्रांसपोर्ट है वो काफी मुश्किल है, क्योंकि उसको बहुत लो टेम्परेचर पे हाइड्रोजन को ले जाना पड़ता है, तो उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है। वो इसलिए मैंने कहा कि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वो काफी आप कह सकते हैं काफी लीड है, वो काफी आगे है इस्तेमाल करने में, और इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि बहुत आराम से प्रोड्यूस होती है और उसको हम ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं, वो आसान है। तो इसीलिए एक सवाल ये है कि ग्रीन हाइड्रोजन यानी जो लिक्विड हाइड्रोजन है, जब वो बनाई जाएगी और उसको बहुत एक स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू ही आप उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो हम शायद उसको देन वी कैन यूज इट लाइक पेट्रोल और डीजल। लेकिन जब तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनता तब तक ये टेक्नोलॉजी थोड़ा सा पीछे है। पर मुझे उम्मीद है कि आने वाले 5-7 वर्षों में जिस प्रकार की इन्वेस्टमेंट हम देख रहे हैं, पर्टिकुलरली रिलायंस जैसा कंपनी अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करती है तो उन्होंने काफी इस पे डीप रिसर्च करी होगी और इसकी जो फिजिबिलिटी है वो स्टडी करी होगी। तो आई एम नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विल बीट हैंड्स डाउन हाइड्रोजन। मुझे लगता है कि अभी आने वाले दिनों में हम इसमें काफी डेवलपमेंट्स देखेंगे। Puneet, in Money Matters this afternoon, I asked you about the advisory being circulated that investors, have the option of booking their profits in the current price levels for stocks in the equity market. Now you have a new advisory, which is that to have stop losses to their current position because there may be a correction. What is your take on these advisories? So, Arjun, two things. One is this predicting a correction or a fall or a rise in the market. I don't think it is advisable because nobody knows. Even I can't predict what is the likelihood of a market going up. I mean, who could have said that this market will rise by 4% this week? It is practically impossible. But I think investors should always be cautious in this market because money invested is hard-earned money. And we know that markets are at very high valuations, that very rich valuations. So it will be nice and prudent
to take profits wherever they can right now and keep your risks low. So I would not say that one should be 100% invested in equities right now. If you have been invested in equities, it would make sense to take 20-30% off the table right now and keep that as your liquid backup in case the markets fall, then you can invest again. So I think as a matter of prudent policy, in any case, investors should take profits. Right now, yes, you're right, because markets are very, very elevated and they're really high. It would be even wiser to take a larger chunk off the table and keep that as your cash reserve. I'm very bullish about equities in next 4, 5, 10 years. But in between, yes, it makes sense to take profits and sit on some liquidity. यदि हम इस बढ़ते बाजार में उन सेक्टर पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहें जहां अपने निवेश पर बेहतर कहने रिटर्न अगले साल, 1.5 साल, 2 साल में निवेशकों को मिल सके, आम यानी जो छोटे हमारे निवेशकर्ता हैं उनकी दृष्टि से ऐसे कौन से सेक्टर उभरते नजर आ रहे हैं आपको? मनोज जी, जो हमने देखा है पिछले 2 सप्ताह में, क्योंकि जब ये मार्केट थोड़ा सा पहले मंदी की तरफ था, फिर अचानक ये तेजी शुरू हुई, तो कौन से सेक्टर्स ने आउट परफॉर्म किया? तो इस सप्ताह 2-3 सेक्टर्स बड़े रिमार्केबल रहे। पहला जो रियल्टी सेक्टर यानी रियल एस्टेट कंपनीज जो काफी उनके शेयर्स नहीं चले थे, इस सप्ताह हमने देखा कि उनमें बहुत तेजी आई। दूसरा, पीएसयू बैंक्स के शेयर्स में हमने सप्ताह तेजी देखी। साथ में मेटल्स के शेयर्स में वो तेजी जो थी वो बरकरार रही। तो मुझे लगता है कि ये जो कुछ हद तक पिछड़ गए हैं शेयर्स, और बाकी शेयर्स में बहुत तेजी देखी और ये कुछ पिछड़ गए, और जबकि हालांकि आईटी, फार्मा जो बहुत फेवरेट थे वो थोड़े से सप्ताह उसमें थोड़ी शांति रही। हालांकि मुझे लगता है कि सारे ही शेयर्स में तेजी रहेगी। अगर बाजार बढ़ता है तो डेफिनेटली वी विल सी मार्केट्स गो हायर। लेकिन मुझे लगता है जो शेयर्स में वैल्यूएशन अभी भी अट्रैक्टिव हैं, पर्टिकुलरली पीएसयू बैंक्स हैं, रियल एस्टेट स्टॉक्स हैं, मेटल स्टॉक्स हैं, जहां पर बहुत तेजी नहीं आई है। मुझे लगता है निवेशक वहां पैसा लगाएं तो वहां तो फिर भी सेफ रहेंगे। Puneet, we had earlier discussed about program trading and artificial intelligence as a means adopted by fund managers to improve their positions. Now you have influencers in the market who are using YouTube to reach out to retail investors who are participating very broadly in the market right now. What is your opinion about this? Again, personally, I am not in favor of such people because they don't see investment is a very personal trait. It needs to risk to be evaluated. I have to see how much risk I can take, how much money I have. Mostly, if you go by social media posts, they do not have reasoned. They don't give reasons for buying or recommending any stocks. I think it is dangerous to rely on them. Investors must apply their own mind and their own time and their money to invest, and they must study it themselves if they're not relying on mutual funds. One day is that you go to mutual funds and do passive investing and let the mutual fund manager do the job. If investors are doing it themselves, they must rely on their own study and not rely on some influencer who has no stake, no appreciation of where the investors stand. So personally, I think it's quite dangerous, and hopefully there will be some kind of a control on this really. पुनीत जी, हम आपको रुपए पर आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। आज 5 पैसे मजबूत हुआ और लगभग 73 रुपए के स्तर पर आ गया है। 2 पैसे ऊपर रहा है, 73 रुपए 2 पैसे के स्तर पर आज। कुल मिला के रुपया कहाँ जाता दिख रहा, और खासतौर से जो स्थितियां हैं उनमें निर्यात पर यदि हम ध्यान में रखें तो क्या संदेश दे रहा है ये? मनोज जी, ये हमने पहले भी काफी डिस्कस किया है और इसी प्रोग्राम पर कि मुझे जो रुपए की स्थिति लगती है बहुत अच्छी लगती है, बहुत मजबूत लगती है। 2 वजह से। एक तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रिकॉर्ड लेवल पे हैं, $630 बिलियन के आसपास रिजर्व्स हैं हमारे, बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है। दूसरा, जो हमारा ट्रेड बैलेंस, जो करंट अकाउंट डेफिसिट चलता था, वो भी बहुत कम हो गया है आज से 5, 7, 10 वर्षों के मुकाबले। तो भारत की जो स्थिति है वो फॉरेन एक्सचेंज को लेकर बहुत कंफर्टेबल है। और यदि आप मुझसे पूछो तो फंडामेंटली रुपया यहां से एप्रिशिएट हो सकता है, पर रिजर्व बैंक ये नहीं चाहेगा। यदि रुपया एप्रिशिएट होता है तो उससे हमारे एक्सपोर्ट को जरूर असर पड़ता है, नेगेटिव असर पड़ता है। तो मुझे लगता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहेगा कि रुपया वो एक टाइट रेंज में 73 रुपया, 75 रुपए इस पर डॉलर की रेंज में वो
स्टेबलाइज करे। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे विश्व में इस वक्त चिंताएं हैं कि करेंसीज में डिप्रिसिएशन आ सकता है काफी जोर पे, और काफी बड़े इन्वेस्टर्स ने ऐसी वार्निंग दी है कि आने वाले एक साल में, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ने की हमको आशंका है, तो करेंसीज में बहुत फॉल आ सकता है। हो सकता है रुपए में थोड़ा सा प्रेशर रहे बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिटिव डिप्रिसिएशन, लेकिन मुझे लगता है कि जो रुपया है वो सभी करेंसीज को आउट परफॉर्म करेगा, क्योंकि फंडामेंटल जो है हमारे करेंसी के और हमारी इकोनॉमी के, और करेंसी जो है वो इकोनॉमी की स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट करती है। तो मेरा अपना मानना यह है कि रुपया बहुत अच्छी स्थिति में है, थोड़ा बहुत उसमें ऊपर नीचे हो सकता है, बट इट विल रिमेन इन अ वेरी टाइट, नैरो एंड स्टेबल रेंज। What about oil prices? They are picking up again, slowly but surely. Yes, of course. Oil is always a pain for India, oil prices when they rise. Usually we have seen that when markets are bullish and there is more money, so there is not only investment, there is not only consumption buying, but actually investment buying. And usually if you see the oil prices will go higher if markets are moving higher or commodities are moving higher. There is that pressure, but no, it is no longer the kind of pressure we used to see in 2010-11 when oil was $110, $20 dollars to the barrel, and we had no foreign exchange reserves. No? The rupee would fall by 10-20% because of oil prices. Today, I don't think oil prices exert any pressure on the rupee at all. We are so comfortable with the foreign exchange reserves. And of course, oil otherwise is an issue because we are just spending that money and wasting it in a sense in terms of foreign exchange. आइए चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजार पर, जहां आज मिला जुला रुख दिखा है। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 2.1% लाभ में रहा। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.8% की वृद्धि हुई। उधर बिकवाली के दबाव में सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स 0.2% नीचे आ गया। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.4% की गिरावट हुई। हांगकांग का हेंगसेंग 0.7% घाटे के साथ बंद हुआ। यूरोपीय शेयर बाजार की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक मिला जुला रुख था। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.2% बढ़त में था। जर्मनी का डेक्स 0.1% ऊपर चल रहा था। उधर फ्रांस के कैक 40 में 0.3% की गिरावट थी। Moving on to the U.S. stock market, the major U.S. stock indices gained yesterday. The S&P 500 and the Nasdaq Composite Index hit record highs. Higher commodity prices helped energy stocks to recover ground. The energy sector rose, reversing most of the losses suffered during the first 3 days of the week. The latest jobs data also encouraged investors. However, gains in Wall Street indices remained in a narrow range. The Dow Jones gained 0.4%, the S&P 500 rose 0.3%, and the Nasdaq Composite Index added 0.1%. Puneet, we spoke about the jobs data in the afternoon in the program. What about tapering? That has been an issue as far as the Fed announcements are concerned. That has been discussed widely. But what has not been discussed has been how the low borrowing cost, which has been leveraged by companies, has that been used now to invest in their corporate human resources, in technology, in infrastructure, so that, you know, they can become more profitable, they can dominate the market more, or are they still buying back shares, and that's pushing the prices up as far as the stock market is concerned? So, Arjun, the excess liquidity that the U.S. economy has, and therefore the world has been useful in many ways, in terms of stabilizing challenged businesses, in terms of increasing returns for stock investors also. So, some money has gone to speculation, some money has gone to building businesses, some money has gone to increasing consumption. So, that is how the central banks work. They can't target money supply to a certain group of people. Having said that, I think tapering this time is not that big a concern. Last time in 2013, when we spoke about tapering, the markets fell like a stone, and everybody was so scared of this word taper tantrum. This time around, we find that markets are much more comfortable, probably because the liquidity is so surplus. I was just reading, and US Fed has a reverse repo, which is the money that banks keep with the Federal Reserve, of more than $1 trillion. So you can imagine the kind of excess money that banks have in US, that they're putting more than $1 trillion with the Federal Reserve. So they're of course not scared of
losing liquidity in a hurry. I think tapering will take effect over a longer term. And finally, I think when the interest rates rise, maybe in 2023, then markets may be affected and businesses may be affected. Right now, markets seem to be comfortable with this idea of tapering in next few months. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल ने वस्त्र उद्योग से मौजूदा $35 अरब के निर्यात को जल्द से जल्द 3 गुना बढ़ाकर $100 अरब का लक्ष्य तय करने को कहा है। आज नई दिल्ली में वस्त्र उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि हम सबको मिलकर वर्ष 2021-22 के लिए $44 अरब के अपैरल सहित वस्त्र और हस्तशिल्प निर्यात का लक्ष्य हासिल करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। श्री गोयल ने कहा कि वस्त्र मंत्रालय निर्यातकों की बकाया प्रोत्साहन राशि की समस्या को सुलझाने के लिए वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार उद्योग की सभी जरूरतों पर विचार करने के लिए तैयार है। श्री गोयल ने कहा कि वस्त्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना और मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क मित्रा पार्क योजना अनुमोदन के अग्रिम चरण में है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय फाइबर क्वालिटी की भारतीय ब्रांड कस्तूरी कॉटन के जारी होने से वस्त्र उद्योग के लिए कारोबार बढ़ाने के नए अवसर मिले हैं। टेक्सटाइल सेक्टर पर हम आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए समझना चाहेंगे कि हमारे सामने कैसी चुनौतियां हैं अपने प्रतिद्वंदियों को ध्यान में रखते हुए। मनोज जी, देखिए, टेक्सटाइल सेक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है क्योंकि सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। इसमें एम्प्लॉयमेंट इन प्रोडक्शन, इन डिस्ट्रीब्यूशन, इन रिटेलिंग बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है और इसका जो ग्रोथ है ना सिर्फ इकोनॉमी के लिए बेहतर है, कंज्यूमर्स के लिए और लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि भारत इसमें पिछड़ा रहा है अनफॉर्चुनेटली। हालांकि हमारी कॉटन बहुत अच्छी है, हमारे पास कैपेसिटी थी, लेकिन हम पिछड़ गए इवन बांग्लादेश जैसे देशों से जो बहुत छोटे देश थे लेकिन हमसे ज्यादा आगे निकले वो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में। मुझे लगता है जो नीतियां सरकार ला रही है इंसेंटिव्स के तौर पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए और रीइंबर्स करने के लिए एक्सपोर्टर्स को, मुझे लगता है उससे शायद हमें बढ़ावा मिलेगा। एंड द फैक्ट कि अब जो चाइना से थोड़ा सा डिमांड शिफ्ट हो रही है और इंडिया आ रही है, उससे भी शायद हमें फायदा हो। Let's have a look at the oil market. Oil prices today rose more than 0.5%. The crude prices climbed after a strong rise in the previous session on a weaker dollar and a fall in U.S. crude stocks. In intraday trade, Brent crude was trading around $73.50 per barrel, while WTI crude prices were at $70.20 per barrel. Puneet, the spot market prices have gone up. What is the futures market indicating in terms of how the prices will trend in the coming days or in the month? So earlier we actually had a contango. That was, there's an ulta badla on the future prices are actually lower than the spot prices earlier, but that has now bridged. We find that future prices and spot prices are in tandem. So I don't see a very sharp fall or very sharp rise in oil prices going forward because OPEC will also be increasing production going forward. I think oil prices will remain in a range around 70 and 75 for the next few months. And what about India's expenditure on a monthly basis, which has been now at $10 billion a month? Yes, we have been spending about $10 billion in terms of importing oil. I think we remain there because if consumption hasn't gone up or gone down, prices are around stable at this level. So I think between $100 and $120 billion is India's outgo on oil imports every year. हाँ, ये चलें सर्राफा बाजार। घरेलू सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की चमक तेज रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर महीने में आपूर्ति होने वाले सोने का मूल्य ₹130 बढ़कर ₹47,120 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। उधर सितंबर में आपूर्ति की जाने वाली चांदी ₹440 बढ़कर ₹63,720 प्रति किलो पर पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने का मूल्य थोड़ा सा मजबूत हुआ, $1,817.20 प्रति आउंस के स्तर पर पहुंचा। चांदी भी थोड़ी सी मजबूत होकर $24.10 प्रति आउंस के स्तर पर पहुंच गई। पुनीत जी, यानी सोने की खरीद के लिए क्या ये उचित समय है और खासतौर से गोल्ड बॉन्ड को ध्यान में रखते हुए? देखिए, मुझे लगता है कि जो सेफ इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये उचित समय है और यदि वो उसको 2 या 3 वर्ष तक रखेंगे तो शायद जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़े तो हम गोल्ड में थोड़ी तेजी देख सकते हैं। $1800 से ऊपर स्तर है, मुझे लगता है ठीक स्तर है गोल्ड का। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से पुनीत जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद मनोज। And before we close, a reminder of the headlines.
Domestic stocks climb to lifetime highs. Sensex closes above the 58,000 mark. Nifty ends above 17,300. Rupee appreciates to deal near $73 rupees per dollar, and gold rises above 47,000 rupees per 10 grams level at the multi-commodity exchange. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.